हेलो स्टूडेंट्स। सो टेक्नोमेट्री कैसी लग रही है और उसकी एप्लीकेशंस कैसी लग रही है? बढ़िया, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 से, थर्ड पार्ट ऑफ द एप्लीकेशंस। एक केबल टावर है, एक 7 मीटर हाइट बिल्डिंग है। 7 मीटर हाइट बिल्डिंग के टॉप से अगर इसके टॉप को देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री। इट मीन्स बिल्डिंग छोटी है, टावर बड़ी है, क्योंकि हम एलिवेशन इसका हम कम हाइट पर है, बिल्डिंग ऊपर हाइट पर है, तो टावर ऊपर हाइट पर हो गई, बिल्डिंग नीचे होगी। अब उसी बिल्डिंग के टॉप से एंगल ऑफ डिप्रेशन टू द बॉटम ऑफ द टावर, यानी यहां से हम नीचे देख रहे हैं, जैसे कोई पत्थर को देखते हैं, नीचे देख रहे हैं, तो एंगल आ रहा है 45 डिग्री। वी वांट टू कैलकुलेट हाइट ऑफ द टावर। सी, इफ दिस वन इज 7, this one is 7, means BE is 7. So what about AE? AE is H minus 7. The most important point, the total height is H, but this one is 7, so remaining is H minus 7. Now we have clear cut two right triangles. First right triangle is this much and second right triangle is this one. Clear? So now we start in triangle ADE. H minus 7 perpendicular upon, suppose this is base x equals to tan, what angle? 60. And tan 60, you know, root 3 is the equation number 1. Second equation in the triangle number 2, that is in triangle DEB. What we are getting? DE, BE. What is BE? 7. Divide by DE. See, opposite to angle 45, this is perpendicular, that's it, it is 7. And DE is the base, equals to tan 45. And tan 45, the easiest number, that is 1. Equation number 2. When we divide these two, हमेशा अपना shortcut method क्या है? Divide करो. So h minus 7 divided by x, 7 divided by x is nothing but root 3 by 1. X and x cancel out. H minus 7 equals to 7 root 3. So h equals to 7 common. Root 3 plus 1 is the height of the tower. कितना आसान, इजी। अगर हमको x भी निकालना होता तो कुछ नहीं करते, h पता है, यहां लगा देते h की वैल्यू, या दूसरे में यहां लगा देते, x 7 आई गया। क्यों? क्योंकि यहां तो डायरेक्ट मिल रहा है, हमको वैल्यू लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। इजी। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर, 12 के बाद 13 पर। इस क्वेश्चन में क्या है कि एक लाइट हाउस दिया है। लाइट हाउस, यू नो, सी लेवल is a lighthouse, and the two ships are sailing like this. As observed from the top of a 75 meter high lighthouse, its height is given. From the sea level, the angle of depression of the two ships 30 and 45. Angle of depression means eye level is here. Observing from here, that's why you have to make this line compulsorily to show these two angles. Angles are given. First one, जितना दूर जाएंगे एंगल छोटा होगा और जितना पास होंगे एंगल बड़ा होगा। तो ये जो एंगल आया बड़ा वाला 45 and smaller one is 30, but you have to write here. And since these angles are alternate interior angles, this one is 45, this one is 30. Question is, if the one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships. We want to calculate this x distance. Suppose this one is y. We can calculate x and y very easily. So first thing, in triangle ABC, in triangle ABC, what we are getting? 75 divided by y equals to tan 45, that is 1. So 75 is the value for y. When you know y, now apply in the triangle ABD. In triangle ABD, what we are getting? 75 divided by y plus x equals to tan 30. And tan 30, you know very well, 1 by root 3. 75
y is already calculated, equals to 1 by root 3. Cross multiply, 75 root 3 equals to 75 plus x. So x is nothing but 75 common. 75 common. What is remaining? Root 3 minus 1. Is the answer. अब चाहिए तो हम रूट 3 की वैल्यू लगा सकते हैं. तो क्या आ जाएगा? 75 इंटू 0.73. वट एवर कैलकुलेशन इज फॉर यू. कंप्लीट करेंगे तो ये आ गया आपके पास x, यानी इन दो शिप्स के बीच का गैप कितना था. क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 13. वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बच्चों के काम का. वन गर्ल ऑफ हाइट 1.2 मीटर स्टैंडिंग हेयर, और एक पास में जो बैलून उसको देख रही है, देन एंगल इज 60 डिग्री. अब बैलून चलते चलते हवा से थोड़ा दूर हो गया तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो गया? 30 डिग्री. जब कोई चीज दूर जाएगी तो उसका एंगल छोटा हो जाएगा, जब पास में है तो एंगल बड़ा होगा. सो दिस एंगल इज 60 डिग्री बट द अदर एंगल इज 30 डिग्री. वी वांट टू कैलकुलेट हाउ मच बैलून इज ट्रेवल्ड, दैट इज x we have to calculate. So initially, suppose it is triangle A, B and C, and it is D and E. We want to calculate first from triangle ABC the value of y. So this height total is given 88.2. 88.2 is the total height, but 1.2 is the height of the girl because eye level is here. So 1.2 if we remove, remaining is 87. So this one is also 87. Very clear. So in triangle ABC, perpendicular by base equals to 10 60 degree, and 10 60 always you know very well. अब तो याद हो गई होगी वैल्यू, है ना? So 87 equals to y root 3. Hence y equals to 87. Y equals to 87 divided by root 3. और जब भी रूट 3 रूट 2 डिनोमिनेटर में आ जाता है तो हम क्या करते हैं? रेशनलाइज. दैट इज 87 रूट 3 डिवाइड बाय 3 एंड इट विल कट इजीली. 3 to 6. So 29 root 3 meters is the value of y. But our aim is to calculate x. बैलून कितना शिफ्ट हुआ? Now you have to take the triangle number 2, ECD. ECD. Now tell me, 87 is the same, but base is now y plus x equals to, angle is also changed, 10 30. 10 30 you know, root 3. 87 divided by y is already with us and x we want to calculate. So y plus x equals to 1 by root 3. Cross multiply, what we are getting? 87 root 3 equals to 29 root 3 plus x. So x is 87 root 3 minus 29 root 3. Root 3 is common. What is remaining? 87 minus 29. So 8, 7 minus 2, 5. Check it again. 58 root 3 is the balloon travel the distance 58 root 3 meters. Easy. इस क्वेश्चन में खास बात क्या ध्यान रखनी है? सम नंबर 14. In the textbook the answer is wrong. Why? They have treated this one as 88.2. They are not considering the height of the girl. That's why they have not subtracted 1.2 from the total height. So be cautious. This answer is 100% correct. So you have to solve this question by reducing the height of the girl, because eye level is here. Is not the ground is here. Eye level is here. That's why be cautious. Answer is 58 root 3 meters. Okay. Now the next sum, sum number 50. अब हम धीरे धीरे टफ क्वेश्चंस की तरफ आ रहे हैं, मगर कोई दिक्कत नहीं, अभी सॉल्व करेंगे और अच्छे से समझ में आ जाएगा. करेक्ट. क्या है कि एक आपके जैसा कोई स्टूडेंट अपनी बिल्डिंग में ऊपर खड़ा हुआ है. क्या देख रहा है? ये रोड है, यहाँ पे कार है, और ये कार 30 डिग्री का एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रही है. डिप्रेशन मीन्स आप ऊपर हैं, ऑब्जेक्ट नीचे, तो क्या एंगल हो गया? 30 डिग्री. द सेम एंगल इज हियर 30, दिस वन इज ऑल्सो 30. आफ्टर 6 seconds
the car is here and now the angle of depression is increased. क्यों increase हुआ? क्योंकि car tower के पास आ रही है. So now angle of depression is 60 degree. Question is, if the car is approaching to the foot of the tower, how many more seconds be taken? कितने seconds और लेगी? बहुत तगड़ा question है, ध्यान से करेंगे. 6 seconds. Suppose करते हैं कि कार की स्पीड है s. Let the speed of the car s meters per second. It means this AB equals to, AB distance is 6 into s. 6 seconds or s meter per second. You know distance equal to speed into time. तो कितना distance हुआ? 6s meters. Suppose the time taken to cover the BC distance, say t seconds. It means the distance covered equals to t into s meters. Very simple. t तो हो गया टाइम सेकेंड्स, s हो गई उसकी स्पीड. अब ये डिस्टेंस भी पता है, ये डिस्टेंस भी पता है और ये इसकी हाइट अपन सपोज कर लेते हैं h, जिस बिल्डिंग पे आप खड़े हो. नाउ इन ट्रायंगल DCB, h divided by ts, correct, equals to tan 60, that is root 3. First equation. Second equation, h divided by ts plus 6s equals to tan 30, that is 1 by root 3. कौन सा ट्राइंगल लिया? DCA. DCA is equation number 2. और अपना शॉर्टकट क्या है? Whenever h and h like this, divide it. So 1 divided by 2. What we are getting? H divided by ts, h divided by ts plus 6s equals to root 3 divided by 1 by root 3. These two will cancel out. Tell me, h and h cancel out. This will become as common t plus 6 divided by equals to 3 by 1. Now tell me, here s and s also cancel out. Now cross multiply. 3t equal to t plus 6. So 2t equal to 6, t equals to 3 seconds. कितना आसान. मगर ध्यान रखना है, let the speed of the car be s. Then the distance formula, this is 6s, this is t seconds, so ts. Now दो ट्राइंगल हम कंसीडर करते हैं, मगर खास बात क्या ध्यान रखनी है, जब भी हम ऊपर हैं तो आपको ये डॉटेड लाइन जरूर बनानी है, लाइन ऑफ हॉरिजॉन्टल, करेक्ट. फिर हम उसमें बनाएंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन. इजी, गुड. नेक्स्ट आता है सम नंबर 15. अगेन 16. अगेन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. The angles of elevation of the top of the tower from 2 points. This is the tower. Angle of elevation. These angles are said to be theta and 90 minus theta. That is, angles are complementary. And distance is given 4 meter from the base, the first, and 9 meter from the base for the second. A, B, C, and D. Complementary angles, you know, theta then 90 minus theta. कोई चाहे तो 90 minus theta लिखे तो यहाँ theta लिख दो, एक ही बात. Now in triangle ABC, t divided by 4 equals to, you know very well, अब तो बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए. t by 4 is tan theta, equation number 1. And in triangle ABD, t divided by 4 plus तो 9, total 9, because this time not plus, the whole distance is given 9, equals to tan 90 minus theta. अब याद करो, what is the tan 90 minus theta? Co-pilot and pilot, क्या हो जाएगा? Cot t by 9, equation number 2. But we want height of the tower. इसका मतलब थीटा को हटाना है. और tan और cot कैसे हटेंगे? You know tan into cot equals to 1. So when we multiply 1 by 2, what we are getting? T by 4 into T by 9 equals to
tan theta into cot theta. What is tan theta into cot theta? Reciprocal of each other. Only one. T square by 36. So T equals to root of 36. That is 6 meters. अब इसी क्वेश्चन को एक बार आईआईटी में पूछ लिया. कैसे? ये डिस्टेंस बोल दिया A, ये डिस्टेंस बोल दिया B, और कहा प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज अंडर रूट AB. वाह, कौन सी बड़ी बात हो गई भाई. हमने भी तो यही किया है. 4 into 9 36. तो वो क्वेश्चन किसका बन गया? आईआईटी का बन गया. करेक्ट. सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड सम नंबर 16. सो नाउ 1 or 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम प्रीवियस ईयर्स बोर्ड पेपर्स वो हम लेते हैं, और ताकि टॉपिक आपका पूरा